क्वेश्चन है कि सर व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया? व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स दैट हिंडर रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया? व्हाई इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन especially very low? Analyze the three premises above through the prism of scholars. सर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर दैट वी आर गोइंग टू यूज हिज नेम इज गणेश थापा. THAPA, गणेश थापा. So what Ganesh Thapa has done is that he has basically done a very deep research on the fact that why South Asia as a region is not able to develop economically, promote regionness. Regionness here means that it is not able to promote what we call as regional integration and facilitate regional cooperation that we saw yesterday. So what are the points that he has given? So the very first point that he says is that the problem or constraint in South Asia is number one, that there are trade barriers. He says that the problem between various countries in South Asia is that all of them are very, very protectionist. We have discussed yesterday that all these countries of South Asia used to perceive themselves as one integrated unit. Earlier, it was one historical integrated unit that was sliced for strategic considerations over a period of time. But the fact is that despite that, and despite the fact that today all these countries are sovereign independent states, trade barriers, number one, remain the biggest constraint in promoting regional integration in South Asia. Economically, this area is not able to come closer primarily only because of this reason, number one. Number two, he says political outlook. He says lack of common political outlook, where not every country is a democracy and not every country has a similar political system is a problem. He says India is a democracy. Nepal is a struggling democracy. Bhutan has just become a democracy. Bangladesh is struggling democracy. Myanmar, for that matter, is not a democracy. Pakistan is an army-controlled democracy. So he says there are different political systems everywhere. Now, problem because of that is that each state, based on the different political outlook that they have their own way of perceiving the regionness. For example, he says that Pakistan will never perceive that promoting regional integration with India is beneficial. Because Pakistan being an army-controlled democracy, he gives an example that if Pakistan goes for regional integration with India, the army will lose its relevance and value in the Pakistani society. Then he says that for that matter, if we look at the case of Myanmar, Myanmar's geopolitical location is such that India wants to have a bigger say in Myanmar, China wants to have a bigger say in Myanmar. Why China wants to have a bigger say in Myanmar is because he says that China today looks at Myanmar to access Bay of Bengal, access waters. But when it comes to India, we look at Myanmar to access basically our northeast. So both have different outlook of how to use Myanmar. Myanmar today precisely tries to leverage this. So Myanmar also understands that both these countries need me, both of them cannot ignore me. Whatever will be my political system, they will have to follow my dictates. So that is why India today says very clearly in its foreign policy that even if there is a military junta ruling in Myanmar, this military junta ruling in Myanmar is not a problem for us. It is not a problem for us. Third important point he says is that these countries here very importantly have technological differences. Technological differences means that every country has advanced and developed very differently. While Bhutan, he says that it prefers to remain isolated from development, does not want to become a technological experiment laboratory. See the word that he uses, technological experiment laboratory. Bhutan does not wish to become a technological experiment laboratory. But when it comes to, let's say, for example, India wishes to embrace technology. When it comes to Pakistan, there is absolute reluctance to embrace technology. So he says that, even at the technological level, there are differences. Because of these technological differences, the issue here is that all these countries in South Asia are not able to regionally evolve into a cohesive unit. And if you remember what we said yesterday about David Mitrani actually advocated for this model only, that identify technical areas of cooperation and build cooperation in those technical areas. So fact that there is no technical commonality, fact that every country perceives that technology differently creates a problem here. Then comes the next important point that he argues. He says that every country here have very, very low what is called as
people to people movement. See, this is an important point. We will elaborate this a little later in subsequent questions today. He says that the biggest problem today in South Asia is that the borders are so rigid, so strong, that people to people movement amongst the border is discouraged. For example, it is next to impossible for an Indian citizen to get a Pakistani visa and vice versa. Similarly, for that matter, it is next to impossible for you to today go to Myanmar just for the purpose of even, let's say, tourism. You cannot go there. Bangladesh, there is hardly any deep level economic interaction that facilitates tourism. Even though Bangladesh and West Bengal have cultural affinity, they are unable to leverage it. So idea is that, the entire South Asia as a unit has been perceived this way, that in this entire unit, people to people movement has never been encouraged. That is the reason why this area will never develop that regionness, and it will act as a hindering factor. So these are the factors that he has identified. Now, keeping this in mind, look at the next question. Is infrastructure a country constraint in development of regionness in South Asia? What are the scholars' opinion? Scholar here is a very important one, Uma Subramaniam. Uma Subramaniam has written a book on the role of infrastructure in South Asia. Uma Subramaniam. What does Uma Subramaniam say? Uma Subramaniam says that the problem today is all these countries, number one, have unequal infrastructure within. Most of these countries within their own territory have poor infrastructure. That is the first point. This poor infrastructure, number two, is attributed because of colonial experience. Because the colonialists, when they came, they developed infrastructure that suited them. So there is haphazard lack of infrastructure within these countries. Third important point here is that these countries also do not have proper border infrastructure. Even at the border level, in order to promote trade, in order to promote regional integration, border level infrastructure has to be top notch. Anywhere in the world. Uma Subramaniam gives an example between Canada and America. Uma Subramaniam says that between Canada and America, there is top quality infrastructure at the border level with good quality highways, integrated checkposts that facilitate cross-border movement. So as a result of which, these countries which have not developed their border areas, that's a constraint. And this is where Uma Subramaniam builds another point to say that border areas where there is no infrastructure is also a problematic area because border areas are very volatile. Volatile means that these are areas of hot conflict. Every time on the border in somewhere on the South Asia, you will have a conflict going on. So that is a serious cause of constraint. Then Uma Subramaniam also says that with respect to geographical terrain, there is a problem. Geographically speaking, sir, geographical terrain of this area is not very conducive for any kind of connectivity. But for example, Uma Subramaniam says that between India and Myanmar, it is next to impossible to use the border to create basically linkages between the two countries. The border is very, very porous. Border is very, very foresty because of the lot of forest, swamps. Next to impossible to create infrastructure there. So therefore, not only there are some natural constraints like terrain, but there are some also issues that these countries politically have, as a result of which infrastructure remains one of the big constraining areas. Now comes the next question, sir. Does South Asia suffer from a lack of comparative advantage? Analyzed through the prism of scholars. Sir, the thesis here of the scholar that we are going to use is Priyanka Kher. 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 Priyanka Kher. She says a very important point. She says that today South Asia does not have a deep comparative advantage. Comparative advantage here, basically, she explains in this sense that many South Asian countries are endowed in certain aspects where they can try to leverage that. She says that, for example, in Afghanistan today, the dry fruits in Afghanistan today, the spices, are something that they can leverage to undertake supply chains to South Asia. She says that because of culinary commonality means that common food practices almost.
That is the reason why the spices and dry fruits, for that matter, of Afghanistan can have a big market in South Asia. But the problem is what? Despite this, Afghanistan is unable to leverage that supply chain because number one, that supply chain is invisible. Invisible means it doesn't exist. Similarly, she says that, for example, with respect to Pakistan, Pakistan today can leverage in a huge way two important aspects in South Asia which are common to every country. One is the textile, and second, apart from textile, is the sports goods. Sir, Pakistan is a pioneer in sport good manufacturing. Cricket bat, cricket ball, cricket related gloves, pads, killi, विकेट ये सब चीजें जो होती हैं ये बनती हैं सब पाकिस्तान में. और दूसरा है सर टेक्सटाइल. टेक्सटाइल तो इसलिए क्योंकि सर जो वो पंजाब पाकिस्तान का इलाका था जो अब पाकिस्तान में चला गया, दैट पंजाब पाकिस्तान एरिया वाज प्योरली पंजाबी डोमिनेटेड एरिया. तो वहां पर जो पंजाबी टेक्सटाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल, जिनको हम पंजाबी सूट्स कहते हैं, सर मेन ऑल्सो वेयर दोज पंजाबी सूट्स, वुमेन ऑल्सो वेयर पंजाबी सूट्स. चलो अब जो है वुमन के केस में थोड़ा सूट वूट का कल्चर जो है कम हो गया. अब जो है वो ऊट पटांग उथंग कपड़े ज्यादा चलते हैं. पर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर डिमांड तो है आज की डेट में भी. बट द क्वेश्चन इज कि सर दे आर अनेबल टू लीवरेज दैट. So try and understand one thing, sir. Every country, she says in her thesis, a very important point, has their own comparative advantage. Problem arises when they are unable to leverage it. Why they are unable to leverage it is number one, because they are not able to create visible supply chains. Number two, she says another important thing. She says that despite having regional similarity, there is no focus on producing for South Asia. She says that even if Pakistani suits, Afghan spices, even if these things, let's say, have a market in India, there is no concept that exists in Afghanistan or Pakistan per se to produce goods for South Asia. So idea is that she is trying to say a very important point, that most of these countries in South Asia have a political idea of basically trying to promote export outside rather than for South Asia. So there is no perspective of South Asia in your export policy. You don't look at South Asia as a market, even though she says that exporting to a far off country like US is more tough today because of supply chain challenges than to export to a neighboring country. भाई आज की डेट में इंडिया को अगर पाकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो सर हमारे लिए वो इजी है या नहीं है? इंडिया आज की डेट में पाकिस्तान को चीजें एक्सपोर्ट कैसे करता है सर? इंडिया से चीज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाती है, यूएई से फिर वो जाती है पाकिस्तान. Who is gaining out of the entire process, sir? The bloody the Saudi Arabian and the UAE. Why are they gaining, sir? Because they have become a transit hub for Indo-Pak trade. So ironical, sir. We are land neighbors, we are water neighbors, but we don't have a trade. Imagine this. So this is what she's trying to say. Ki, sir, you have to prioritize South Asia number one in your export policy. Then she says the next important point, that this problem arises because, thirdly, the capital movement is very, very low. None of these countries today facilitate movement of capital in each other's territory. कैपिटल मूवमेंट है ही नहीं सर. पाकिस्तान में एफडीआई सोचो, कौन कंपनी लगाएगी इंडिया से? अडानी को बोल दो लगा लेगा वहां पे, उधर के भी एयरपोर्ट उठा लेगा, वो उठाई गिरा आदमी है, कुछ भी उठा लेगा. तो आप चीज को समझो ना सर, कैपिटल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर. जबकि किसी भी रीजन में, चाहे अमेरिका का रीजन आप ले लो, नॉर्थ अमेरिका वाला, या आप यूरोपियन यूनियन का रीजन ले लो, या आप आसियान एज अ रीजन ले लो, सर हर जगह आप ये देखोगे कि सर कैपिटल मूवमेंट इज द बेस ऑफ रीजननेस, और वो है ही नहीं यहाँ पर. तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं बेटा. इसके बाद आते हैं अगले लास्ट पॉइंट पे. वो कहती कहती कि सर द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स इज सो पुअर दैट इवन इफ टुमारो ऑल दीज अबव बैरियर्स आर रिमूव्ड, वर्कफोर्स ट्रेनिंग इश्यूज विल ऑलवेज एक्ट एज अ बैरियर. बिकॉज सर एवरी कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ देयर ओन. अब भाई फॉर एग्जांपल अफगानी है, अफगानियों के पास क्या है? अफगानियों के पास है भाई ड्राई फ्रूट.
अब वहां पर जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है सर, वो ड्राई फ्रूट बेचने की वो अलग है ना भाई। वहां पर आपको स्किल चाहिए कि आप दुकानदारी कैसे करो। 200 200 200 200 इस चीज की सेल लगानी है उनको। अब इंडिया में वो चीज नहीं है सर। यहाँ पे हमारे सोफिस्टिकेटेड जो है वो दुकानदार होते हैं, वो एमबीए करके जो है बेचारे कोट पैंट डाल के टाई लगा के जो है वो एकदम सोफिस्टिकेटेड चपड़ासी बन के घूमते हैं। आई एम एमबीए मार्केटिंग, खींच के चप्पड़ मारो उसके मुंह पे। एमबीए मार्केटिंग, सेलमैन है तू, सेल बॉय है। सिर्फ ढंग के कपड़े पहन लिए तूने, एमबीए मार्केटिंग का क्या मतलब होता है भाई? अंग्रेजी बोलने वाला सेल बॉय बस। दिस इज हाउ एमबीए। जाके तू भी वही प्रोडक्ट बेच रही है क्या भाई? कोलगेट ले लो। दुकानदारों को जा जाके पूछ रही है। मेरी मार्केटिंग की जॉब है, सेल बॉय है बेटा। क्लियर कर दे अपने रिज्यूमे में, लड़की नहीं मिलेगी नहीं तो। तो ये चीज को समझो सर। ट्रेनिंग पोटेंशियल ऑफ द वर्कफोर्स इज वेरी डिफरेंट. व्हाट शी इज ट्राइंग टू imply by this point is there is no commonality in the way we look at exploiting that comparative advantage, because otherwise you will train your workforce to explore that comparative advantage. भाई फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ अफगानी पीपल टुडे हैव अ वर्कफोर्स फॉर विच दे हैव टू हैव अ स्किल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया, they will train their population to do that selling in India. They will use Indian markets as a case study and teach their people how to do selling in India. But are they doing that? Answer is no. Are we doing, for that matter, anything from India to do that kind of selling in, let's say, Afghanistan or Pakistan? Answer is no. Or for that matter, in Nepal? No. So this is where she says the larger problem arises. Now, if you see the next question, sir, how does power asymmetry play a role, constraining factor in the development of region, as analyzed through scholars, sir? Sir, one scholar here, his name is S.D. Muni, Sukhdev Muni. Sukhdev, S-U-K-H, Deo, D-E-O, Muni, M-U-N-N-I, Sukhdev Muni. He's a Nepali scholar, sir. And he's a person from Nepal and who has written some exceptionally good books on foreign policy. Sukhdev Muni, S.D. Muni. Very, very talented person. He has identified the power asymmetry. Power asymmetry means that he says that different countries in South Asia have a lot of mistrust with each other. He says that the principal reason of mistrust is the historical tensions that existed between each other. He says कि भाई ये mistrust इसलिए हुआ because most of these countries during Cold War were exploited. They were exploited. Why they were exploited is because he says that the reason for their exploitation was कि the Cold War players wanted to use these countries as bases to counter each other. For example, Pakistan remained a Cold War base of the Americans to keep a check of the Soviet. Presence of America in Pakistan throughout Cold War period is an irritation for India. Same way today, China looks at India this way, that China says that you have invited US in your territory to counter us. More engagement between India and US, more irritation for China. So problem is that there has been, what SD Muni says, number one, a historical element of mistrust. He says that because of this historical element of mistrust, what has happened is each country has evolved a new trajectory of their power asymmetry. New trajectory of power asymmetry means that because of this historical mistrust, Pakistan has developed its military potential to target India. India has developed its military potential to keep a check upon Pakistan and China. Similarly, Myanmar has developed its military potential with the larger objective of deterring India or China to do any kind of democracy promotion. So every country, what they have done is they have evolved a different element of military power that has further fueled the mistrust. So as a result of which, one thing, number one, becomes very clear, that power asymmetry between different South Asian players is a cause of tension. Then SD Muni says, number two, that military might differential theory. Military might differential theory. He says that military might differential theory means that every country in South Asia has a very different military might. None of them today are able to clarify to each other how they wish to use that military might. Therefore, every neighbor believes the perception that the military might has been developed for us. So every country, what they have done is they have evolved a different element of military power that has further fueled the mistrust. So as a result of which, one thing, number one, becomes very clear, that power asymmetry between different South Asian players is a cause of tension. Then SD Muni says, number three, that military might differential theory. Military might differential theory. He says that military might differential theory means that every country in South Asia has a very different military might. None of them today are able to clarify to each other how they wish to use that military might. Therefore, every neighbor believes the perception that the military might has been developed for us.
Sir, if India acquires a new missile from, let's say, Russia or from USA, China thinks it is for me. Pakistan will think it is for me. If Nepal today happens to buy some arms, let's say from China, or tries to engage with China at the security level, India will say it is done with an intention to keep a check upon me. Similarly, if Bangladesh very recently last year decided to go for purchase of a submarine from China, पुरानी सी एक सबमरीन उठा के दे दी उसको, ऐसी गलीज सी एकदम, जंग लगा हुआ पूरा एकदम, काई जमी हुई हरी हरी, अब वो दे दी उसको। अब तब से इंडिया ने अपना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू हैव ट्राइड टू मिलिटराइज बे ऑफ बंगाल। मिलिटराइज बे ऑफ बंगाल? तुम क्या वहां पर यूपी पुलिस के लड़के घुमा रहे हो बे ऑफ बंगाल में? अजीब बातें करते हो, तुमने भी तो मिलिटराइज कर रखा है यार। तो प्रॉब्लम टुडे इज सर कि देर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, इफ चाइना विल ब्रिंग अ रिसर्च वेसल टू श्रीलंका, China bringing research vessel to Sri Lanka will always be perceived negatively by India. China feels that these are not research vessels. These vessels, we say, are there for carrying out what is called as hydrographic survey. So we feel that because they are here for hydrographic survey, they are trying to do what is called as underwater mapping of the Indian Ocean. यार देखो, ऐसा है, इंडियन ओशन में अगर इंडियन लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके डैडी का है इंडियन ओशन। यार इंडियन ओशन में आपको किसी भी कंट्री से क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आप अगर आज की डेट में इस प्रकार की आपत्ति रेज कर रहे हो, तभी तो आप देखो ना कि सर चाइना जो है फिर वो आपत्ति रेज करता है अगर आप कुछ वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी में करते हो। तो सर प्रॉब्लम इज कि ईच कंट्री हैज अ डिफरेंट मिलिट्री माइट। एसडी मुनी सेज कि बस द प्रॉब्लम टुडे इज दैट ईच कंट्रीज मिलिट्री माइट इज नॉट परसीव्ड वेल बाय द अदर पार्टी। दूसरों को सिर्फ एक दूसरे से इनसिक्योरिटी है। अब तीसरा उसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि सर दिस प्रॉब्लम गेट्स एग्रावेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल अप्रोच टू बिग पावर्स। डिफरेंशियल अप्रोच टू बिग पावर्स। आज दो क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में सर, और उन क्वेश्चंस को आप करेंगे, और फिर जब पेपर 2 का तो कंप्लीट होगा डाउट सेशन के टाइम पे, उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि आपने किए हैं और क्या किया उसमें। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट पे जो एस डी मुनी ने लास्ट बोला, ही सेज कि भाई डिफरेंशियल अप्रोच टू बिग पावर्स। सर डिफरेंशियल अप्रोच टू बिग पावर का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है सर कि एवरी कंट्री इन साउथ एशिया टुडे हैज अ डिफरेंट अप्रोच टू लुक एट डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, today Pakistan, he says, looks at China in the way that China will be for Pakistan what USA at one point of time was. ये पॉइंट समझ आया? पाकिस्तान टुडे लुक्स एट चाइना इन दिस वे दैट चाइना विल बी फॉर मी, मेरा आका, एज यूएसए वाज फॉर मी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहली चीज। सर इंडिया लुक्स एट यूएसए टुडे that USA will be for us what Russia was for us at one point of time. कि भाई सारे डिफेंस प्रोडक्ट हम रसिया से खरीद रहे थे, रसिया हमारे को एकदम मस्त सारे के सारे प्रोडक्ट बेच रहा था, हम खरीद रहे थे, रशियन आ रही थी, हम खुश थे, बढ़िया चल रहा था। अब अमेरिकन लेनी पड़ रही, तो ये दिक्कत है। अच्छा, अब तीसरी चीज, विद रिस्पेक्ट टू लेटेस्ट से श्रीलंका, द मोस्ट नोटोरियस कंट्री सर, Sri Lankans have initially tried to always remain a backdoor entry point for the British throughout the Cold War period, thereby not only inviting the British but the Americans. Today, Sri Lanka openly embraces China because Sri Lanka says that China is the country today in the region that will provide every developmental activity and support. हमने कहा क्यों, हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं लग रहे तुम्हारे यहाँ पर? हम भी तो आगे बोर्ड लगा के चले जाते कार्य प्रगति में। वो अलग बात है कि 25-30 साल सिर्फ बोर्ड पड़ा रहता है, पर बोर्ड लगाने का काम तो करते हैं हम कम से कम। सर श्रीलंका में चाइना ने एक रिकॉर्ड लेवल पे, आपको पता है सर, 17 दिन में एक फ्लाईओवर बना दिया था। 17 दिन में स्क्रैच से फ्लाईओवर बना दिया। हमारे यहाँ पे 17 दिन सिर्फ जो है एमपी की अवेलेबिलिटी देखने में लग जाते हैं।
कि एमपी अवेलेबल होगा नहीं होगा, उस दिन कितने टाइम के लिए आएगा नहीं आएगा, उसके अरेंजमेंट में समोसे रखने हैं नहीं रखने। सर चाइना इसीलिए चाइना है, हम आज की डेट में अभी वही भूखे नंगे। फर्क है ना सर ये सोच में, 17 दिन में फ्लाईओवर बनाना, और यहाँ पे 17 दिन में हमारे बाबू सिर्फ जो है अभी मीटिंग कर रहे हैं सोच के कि भाई हमें बनाना क्या है। See the difference, sir. So any country will obviously in this regard look at as a developmental provider to somebody who can provide quick relief. There is another example he gives. He says that the problem is that the Nepali people always looked at India for development support. They always told India that please construct a highway connecting Nepal, Kathmandu to that of the Chinese border. We never did that. 122 kilometer. 122-kilometer stretch from Kathmandu to the Chinese boundary. Nepal time and again said कि please help us to construct this highway. This will help us to do trade with China. It will promote the goodwill of India. We never did that. Eventually, what happened? China came. China constructed that highway. In fact, see the beauty, sir. Nepalis were asking for a 2-lane highway. When Chinese came, they created a 6-lane highway. Now see the difference. Why will, for that matter, now Nepal have a big power approach towards India that India will be a development provider? So, sir, this is what SDMoni is trying to say. Ki power asymmetry is such, deliverability of projects is such, that at this level there are too many variants today that prevent these countries to develop coherence at the regional level, come together at the regional level. Everyone has a different perspective on this. Clear हुआ ये? अब आओ जी अगले क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ सार्क. व्हाट आर द बेसिक challenges faced by the body today, sir? Explain the creation of SAARC. What are the broad challenges faced by the body today? यहाँ पर 2 लाइनें लिख लो सर, फालतू का क्वेश्चन है पर वही कंटेक्चुअलाइजेशन के लिए जरूरी है. सार्क वाज क्रिएटेड इन 1985 as a regional organization where the charter of SAARC categorically stated that the countries will use SAARC for promoting regional cooperation and refrain from bringing political issues. Three challenges confront SAARC today. Number one, deviation from the charter. As Pakistan has persisted, नीच किस्म का देश है ना, तो पाकिस्तान has persisted to use SAARC for bringing up Kashmir issue. Thus preventing regional cooperation. Number two, charge by SAARC members that India does not do developmental sharing or have a policy like that similar to its African diplomatic strategy. Number three, persistent issues like terrorism, illegal infiltration,
and counterfeit currency. Counterfeit means fake currency. Counterfeit currency through non-state actors has impeded regionalism. ठीक है जी. Next question, sir. What does the thesis of Swan Singh argue on SAARC? 5 points his thesis argues. Let's look at each one. Number one, he says, firstly, that SAARC today has been mostly defined through the Western lens rather than through the South Asian lens. Western lens. That means that he says that most of the Western countries have displayed more interest in SAARC than the South Asian countries which are members of SAARC. They are more interested to know what is happening in SAARC, why what is not happening in SAARC. This point is related to what he says in the second point. He says in the second point that SAARC countries today do not have a research culture. These SAARC countries, they do not have a research culture. Research culture here means कि these SAARC countries academically do not come together to produce research that how can these regional impediments, all these regional impediments that we have seen till now, how can they be removed? So there are hardly any research papers promoted. For that matter, most of the researches that are done in India, at least in our case, we can definitely say are again more centric towards the global powers. How should India deal with US? How should India deal with Britain? How should India deal with Australia? यार बगल में नेपाल है, एक्सटेंडेड उत्तर प्रदेश, थोड़ा देख लो उसको भी. मतलब योगी जी की सरकार बनानी है नेपाल में भी, लेकिन नहीं. तो सर रिसर्च ही नहीं है यहाँ. Third point that he says is कि sir South Asians do not very clearly know the purpose as to why they have created the SAARC. Thus, they are suffering from what is called as the identity crisis, sir. कि why they have created SAARC? They don't know, sir. Whether they want to use SAARC for promoting regional economic cooperation, whether they want to use it for promoting regional political cooperation, whether they want to use it for promoting a common SAARC currency, they don't know, sir. Europeans had this idea, sir. We don't know why we have created SAARC. We created SAARC, as he says, just because, in fact, in his book he has mentioned, he says India and other countries came together in 1980s to create SAARC because that time regionalism was fashionable. फैशन में चल लिया था, क्योंकि उस समय रीजनल ग्रुपिंग्स बन नहीं थी, तो हमने कहा फैशन में चल लिया, चलो हम भी ले लेते. जैसे आपको पता होगा एक टाइम पे वो फैशन में चला था कटी फटी जीन्स पहननी है, उधड़ी हुई जीन्स. बॉम्बे में धारावी से उठा के लाते हैं, लेकिन वो जीन्स पहननी है जी. कितने की है जी? 4500 रुपए की. और पूरी जीन्स कितने की है सर जो कटी फटी नहीं है? 2100 रुपए की. सोचो, आपके पापा को पापा कह रहे हैं भैया ये मतलब मैंने ऐसा कार्य किया क्यों उस रात की ये हुआ. थोड़ी सावधानी बरत लेते तो जीवन में ऐसे दिन ना देखने पड़ते हैं. मम्मी अलग कलेश डाल के बैठी है कि भाई हम तो तुम्हें बोल ही रहे थे लाइट जला लो लाइट जला लो. तो समस्या ये है सर कि पर्पज ही नहीं क्लियर कि हमने जो सार्क बनाया उसका एक्चुअल में पर्पज था क्या. अब आते हैं सर अगले पॉइंट पे. ही सेज कि सर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी हाई. इनके आपस में कलेश नहीं खत्म होते. Interstate conflicts between each of the member of SAARC. Sir, when you have interstate conflicts, at least that is the time when you don't create a regional grouping, na. And on top of that, leave out creating a regional grouping. You have interstate conflicts. You create a regional grouping, and then you say that in this regional grouping, we will leave everything aside. We will not discuss our political conflicts. We will talk about everything else. मतलब how stupid. So, sir, he says कि sir, the fundamental premise of the creation is problematic. This is not how the regional groupings are created, sir. Specifically when they have regional constraints like interstate conflicts. ऐसे नहीं होते created, sir. First strategy is to resolve them. फिर वो कहता है लास्ट पॉइंट, वो कहता है कि भाई स्मॉल स्टेट्स डू नॉट पुट अप आइडियाज ऑफ रीजनलिज्म.
स्मॉल स्टेट जो हैं सार्क के मेंबर सर, वो बेसिकली किसी प्रकार के आइडिया को देते ही नहीं, वो मन मुटाव करके बैठे। उनसे कोई चीज का सजेशन मांग लो, मैं नहीं बताता, मैं नहीं बताता। सोचो, जैसे वो निब्बा निब्बी में नहीं होता कि निब्बा पूछ रहा है निब्बी से क्या खाना है, मुझे नहीं पता। अरे बोल दो क्या खाना है, तुम्हें मेरे को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है? डायन बोल दे क्या खाएगी, जो खाना है खिला देंगे तेरे को, खा और घर पे निकल। लेकिन नहीं, हमारे प्यार में यही रह गया कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है। अरे भैया नहीं पसंद, नेपाल से पूछ लो यार, नेपाल को पूछो क्या करना है रीजनलिज्म में, मुझे नहीं पता। क्यों मेंबर बन के घूम रही है यहाँ पे, निकल यहाँ से बाहर फिर। तो आप चीज को समझो सर, इन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक है स्वरण सिंह साहब के साथ। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। व्हाई इज द ट्रेड वॉल्यूम विद इन सार्क लो, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन द इकोनॉमिक रेलम्स, आर्ग्यू यूजिंग द स्कॉलरली अप्रोच सर। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज फॉर यू फॉर योर होमवर्क। अच्छा सी सर, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू। अभी मैं आपको क्लासेस के दौरान मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था कि मैं आपको कई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? वो मैंने अपने वर्कबुक में भी, मेरे पास भी जो वर्कबुक है ना बेटा, मैंने भी यहाँ पर आपके लिए देखो ये मार्क करके रखा है, HW लिखा हुआ है, शायद अगर आपको दिख रहा हो मतलब, तो ये मैंने भी HW करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मुझे भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। एक बार दिसंबर 3rd वीक तक क्लासेस खत्म हो जान दो। हर एक क्वेश्चन के लिए जो रिसर्च पेपर की आवश्यकता है, उस रिसर्च पेपर को मैं आपके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा कोर्स पेज पे। और आपको साथ में बोल दूंगा कि जैसे ये पेज नंबर 73 है, तो यहाँ पर मैं आपको बोल दूंगा कि रिसर्च पेपर फॉर पेज नंबर 73, रिसर्च पेपर फॉर पेज नंबर 93, लाइक दिस। तो आपको एग्जैक्टली exactly मालूम रहेगा कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा रिसर्च पेपर यूज करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता दूंगा। आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है, उस रिसर्च पेपर में से जो रिसर्चर का पूरा व्यू पॉइंट है उस पेपर का, उस व्यू पॉइंट को आर्ग्यू करते हुए आपने यहाँ पर उसकी समरी बनानी है। दिस प्रोसेस विल ग्रेजुअली ट्रेन यू टू रीड रिसर्च पेपर्स ऑन योर ओन, बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, 10 महीने हैं उसके बाद मेंस तक। 10 महीने में पेपर 2 की कोई क्लास दोबारा नहीं होगी बेटा। 10 महीने में सिर्फ ये हो सकता है कि मैं आपको ओकेजनली रिसर्च पेपर जो है प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता रहूँ, ताकि उन रिसर्च पेपर्स को आप पढ़ के जो है रीसेंट रिसर्चेस को इनकॉर्पोरेट करते रहो। पर वो प्रोसेसिंग की एबिलिटी अभी डालोगे तो आगे जाके काम आएगी आपको, ठीक है? और जब डाउट क्लास लेंगे तो उस डाउट क्लास में जो डाउट्स वगैरह होंगे प्रोसेसिंग में कि क्या प्रोसेस करना है, क्या ये पॉइंट रेलेवेंट था नहीं था एटसेट्रा, वो सब डिबेट अपन कर सकते हैं। तो मेरे पास भी मार्क रहेगा, आपके पास भी मार्क रहेगा, निश्चिंत रहना, उसको लेके आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं कुछ स्कॉलर्स, स्कॉलर्स और यहाँ पर कुछ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं। सार्क मेंबर्स के डब्बे बन रखे हैं, साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के डब्बे बन रखे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पूरे पेज पे ना सर, दीज पॉइंट्स विल इनेबल यू टू राइट आंसर्स इफेक्टिवली, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द इम्पेडिमेंट्स दैट व्हाट प्रिवेंट्स रीजननेस एट डिफरेंट लेवल्स, चाहे वो इकोनॉमिक पूछे, चाहे वो आपसे स्ट्रेटेजिक पूछे, चाहे वो फिलोसॉफिकल पूछे, पावर एसिमेट्री पूछे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूछे, अब आपको जितने डायमेंशन में पूछ सकता है सब पता है। पर ये जो पॉइंट्स इस पेज पे होंगे ना सर, दीज आर गोइंग टू एक्ट एज फिलर्स, फिलर्स फॉर योर आंसर्स, कि ये आपको फैक्चुअल एविडेंसेस देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो, सार्क मेंबर इंडिया पाकिस्तान पहला, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है सर, सियाचिन एंड कारगिल। नंबर 2, अफगानिस्तान पाकिस्तान, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट दुरंद लाइन। अब आते हैं अगले पॉइंट पे सर, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज सार्क मेंबर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, इंडिया पाकिस्तान। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट क्या है सर, पाकिस्तान बेस्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, SST, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अगला है सर सार्क मेंबर और कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। ये पहला लिख लो आप यहाँ पर, पहला इज इंडिया पाकिस्तान, और कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर आता है इंडस वाटर ट्रीटी सर। इसके ऊपर क्वेश्चन अगले साल पक्का आएगा, इंडस वाटर ट्रीटी पे। आज ही बता रहा हूँ आपको, अपनी सेटिंग है UPSC में। अगला है सर इंडिया बांग्लादेश,
इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या है सर इशू? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज में तीस्ता रिवर वाटर। दीदी ने कलेश डाल रखा है, ममता दीदी ने। तीस्ता नदी का पानी नहीं दूंगी मैं। अगला लिख लो सर, सार्क मेंबर्स कॉन्फ्लिक्ट है ओवर इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज सर। ये थोड़ा सा हैपनिंग इशू है सर, क्योंकि देखो ट्रम्प आ गया है ऊपर से। आपको पता है हमारे असम का एकदम सेक्सी मुख्यमंत्री जो है असम में, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वो भी ये शब्द का बहुत प्रयोग करता है। ट्रम्प की फैमिली से ही रिलेट करता है, वो ट्रम्प के चाचा का छोटा लड़का है वो। और इंडिया में भी ये शब्द पे अभी आपको पता है एक पूरा पॉलिटिकल कैंपेन रन किया गया था झारखंड में, मिट्टी पलीत हो गई वहां पे जहाँ पे इनकी। तो इमिग्रेंट इशू पे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सर यहाँ पे पहला है इंडिया बांग्लादेश, इलीगल माइग्रेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। दूसरा है सर अफगानिस्तान पाकिस्तान, पश्तून्स। पश्तून बड़े जबरदस्त हैं सर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चपेट मार के बॉर्डर पार करके अपने घर चले जाते हैं, मानते ही नहीं। और तीसरा है सर नेपाल भूटान के बीच में सर। नेपाल भूटान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है सर, भूटानी रेफ्यूजीज आर लिविंग इन नेपाल। सो लॉट ऑफ भूटानी रेफ्यूजीज आर लिविंग इन नेपाल सर। अच्छा, अपेरेंटली ये नेपाल भूटान का ना इशू याद रखना, दो नॉट नीडेड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट जनरल कॉमन सेंस। इशू वाज कि सर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम भूटान केम ओवर टू नेपाल because see there is a lot of buddhism based connection between the two countries. Lot of buddhist sites are in Nepal also. So lot of Bhutanese people who were Buddhists, they left Bhutan to come to Nepal. They came primarily for religious purpose, and gradually they settled in Nepal and they refused to go back. So today Nepal says that you behave like Jews, कि यूरोप से उठ के आए और जो है अरब के एरिया में आके बैठ गए और अब घर खरीद लिया, अब कह रहे हो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। भूटानी कह रहे हैं यार हम भाई साहब जीवन में मतलब मक्खी नहीं मारी आज तक हमने, तुम कह रहे हो हम जूस हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। जूस तो भाई साहब मतलब वो तो आदमी खा जाए, इतने आदमखोर होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार हमारे को ऐसा कंपेयर क्यों करना आपने, बट द फैक्ट इज कि वो कहते हैं हम रिलीजियस पर्पज के लिए आए। उन्होंने कहा कि भाई जब रिलीजियस पर्पज के लिए आए हो, तुम्हारी वो पूजा वूजा हो गई, अगरबत्ती जल गई फूक गई, अब निकलो यहाँ से वापस जाओ। हम इससे ज्यादा पूजा का क्या मतलब है कि बैठे रहेंगे, मतलब अब यहाँ पर तुम्हें बैठ के कोई पूजा मतलब पूजा लेके थोड़ी जाओगे यहाँ से। तो समझ नहीं आ रहा है कि वो वहां पर बैठे क्यों है। अब देर इज वन थ्योरी विच इज हाईली प्रोबेबल दैट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इट सेज कि भाई अमेरिकन इंटरेस्ट इज देयर टू कीप दोस भूटानीज इन नेपाल टू चेक द नेपाल पीपल, and through those Bhutanese people they basically want to not only keep a check upon the Nepali people, but because these Bhutanese are basically having affinity to Tibetans, so Americans want to use them basically to keep a check upon Tibet which is bordering Nepal. पर अब ये एस्पेक्ट हम एग्जाम में नहीं लिख सकते सर, ठीक है ना, क्योंकि ये कोवर्ट ऑपरेशंस के पार्ट्स होते हैं, ये देश करते हैं ऐसा करने दो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर देयर इज एन इशू बिटवीन द टू। नेपाली बड़ा चिढ़ते हैं, वैसे बड़े मीठे लोग हैं नेपाल, नेपाल के जो लोग हैं मतलब बड़े मीठे लोग हैं, अदरवाइज कोई इतनी उनके साथ समस्या नहीं होती है। वो छोटे छोटे किस्म के वो सब्जी यही चाहिए, चाकू मार देंगे एकदम आपको। जो कुकरी होती है उनकी, छोटी छोटी कुकरियां लेके घूमते हैं भाई साहब एकदम। बड़े भोले लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, ऐसे तंग नहीं करते। पर ये है कि मतलब थोड़े से रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल किस्म के लोग नहीं है वो, थोड़े से अड़ियल टाइप के होते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, हाउ कैन सार्क ओवरकम चैलेंजेस? Explain by establishing a broad contour of conflict resolution in South Asia that can help in promoting regionalism. Use scholarly analysis to build the argument and use the prism of new regionalism thesis. How does South Asia Partnership International help in the process? SAPI, South Asia Partnership International. So, sir, there are two important scholars here, Mahendra Lama, Niaz Nayak. Mahendra Lama, LAMA, Niaz Nayak, Niaznaik. Niaz Nayak. These two people have basically done a lot of research on promoting regional interests among SAARC, and they have given an argument which is called a new regionalism thesis. Now, let's understand firstly what is the new regionalism and what does it mean first. They say कि sir new regionalism in South Asia can be possible. They say it can be possible only and only when
we now look at promoting regionalism in South Asia differently. How do we do it differently? They say that the new concept that has to be brought in to promote regionalism here is that we have to go for something called track to diplomacy. So track to diplomacy means that we have to use the bunch of retired diplomats. We have to use the bunch of retired diplomats who have served in these countries, in the neighbors, in the SAARC members, and then using them, we have to build an academic culture first. And these diplomats who have served in each other's countries, they need to sit down to identify how they are going to resolve the broad conflicts. So what is the idea? The idea is very simple, sir. New regionalism through track to diplomacy. Diplomats who have served here sit down. They identify regional constraints. They identify the problems. Because they are diplomats, they also know the solutions. Because they know the solutions, they have to sit down now and now they have to propose at the track one. Track one means official level. That how do we remove these impediments? So this is number one, the new regionalism idea. Number two, let us look at first this. What is the South Asia Partnership International? So Mahendra Lama Niyaz Nayak say कि sir, South Asia Partnership International is a theory which advocates that it's a civil society organization. SAPI जो है, it is a civil society organization which has been created. This civil society organization that has been created is now going to sit down to identify issues that can facilitate movement of people to people. तो सापी क्या है सर? एक सिविल सोसाइटी है. इसका काम क्या है? इसका काम है सांप को इधर से उधर ले जाना. यानी कि ये बेसिकली क्या करेगी? दे विल सिट डाउन एंड आइडेंटिफाई हाउ पीपल from one state can move to the other state. So their objective is to promote the movement of the people. And when they try to do this promotion of the movement of people, sir, what will happen is, sir, they argue that through this people to people movement, there will be a lot of pressure upon the political actors of the states. Because people to people are bottom up approach. Bottom up approach means ki, sir, they are at the bottommost fulcrum of the society. So if people to people engagement happens, they will put pressure upon the political class to open up and deepen ties further. Now they give a strategy. They say the first thing that should happen is that people to people ties should be boosted based upon tourism. So first thing that these people of SAPI should do is that they must propose that basically tourism has the potential. अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टूरिज्म हो रहा है. वो यहाँ पर आएंगे सर, यहाँ पर सिर्फ बम लगा के सिटीज में चले जाएंगे. उनका और काम ही क्या है पाकिस्तानियों को? उनसे क्या उम्मीद रखते हो आप? टूरिज्म करने आएंगे. हम वहां पर जाएंगे तो हम सिर्फ खाने पीने जाएंगे. मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, जीवन में कभी मौका मिले, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, एक बार पाकिस्तान जाके खाना जरूर खाना. पर जाना पाकिस्तान तब अगर आप नॉन वेज हो. अगर आप लानती वेज हो तो पाकिस्तान की तरफ देखो ही मत. आप जाओ श्रीलंका जाके इडली खाओ, सांबर में डूब मरो. लेकिन अगर आप नॉन वेज खाते हो सर, पाकिस्तान एक चक्कर जरूर जीवन में लगाएंगे. ऐसा नॉनवेज आपको मैं कह रहा हूँ सर, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा. उसका एक अलग ही टेस्ट है. तो ये कह रहे हैं कि सर टूरिज्म बढ़ाओ, पीपल टू पीपल मूवमेंट बढ़ाओ, नंबर वन. नंबर टू, वो कहते हैं कि सर अपार्ट फ्रॉम पीपल टू पीपल मूवमेंट, फैसिलिटेट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर so that people can travel flexibly by roads. This will promote businesses also. सापी का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है सर? कि promote business interest. How do you promote business interest? By creating road infrastructure. So अगर रोड बनेगी तो वो फायदेमंद होगा. अब जैसे एक रोड बन रही है आज की डेट में, आईएमटी हाईवे कहते हैं उसको, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे. गडकरी जी बना रहे हैं सड़क, एकदम टोल देना पड़ेगा सबको, क्योंकि गडकरी जी ने सड़क बनाई है तो वो सड़क पे देखने का भी टोल ले लेते हैं आजकल. अगर आपने रोड को देखा हो तो 20 रुपए निकाल लिए जेब से, ऑटोमेटिक जीपे से कट जाएंगे. कैश ना हो तो भी चलेगा. मतलब गडकरी जी मराठी हैं, मतलब मेरे को बड़ी उम्मीद थी उनसे, पर उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन गुजरातियों जैसा होता जा रहा है. ठग लो, हग, मतलब एकदम नंगा कर दो आदमी को. मतलब थोड़ा उनको अपनी एक स्टेचर मेंटेन करना चाहिए जिस प्रकार के वो व्यक्ति. पर वही चलो, प्रभाव का इफेक्ट होता है सर, पड़ गया उनपे भी. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखो सर, ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है. अगर ये ट्राइलेटरल हाईवे बन गया, आप सोचो, मैं कह रहा हूँ सर, शिमला मसूरी नैनीताल दार्जिलिंग खत्म.
सारी दुनिया सिर्फ गाड़ियां उठा उठा के थाईलैंड भागेगी। हमारे मोदी जी ने खुद सोचा है और बोला है उन्होंने कि वो पर्सनली गाड़ी चला के जाएंगे यहाँ से। रास्ते में म्यांमार वाले से भी मुलाकात हो जाएगी, थोड़े पकोड़े वकोड़े भी खा लेंगे। और मैंने आपको बताया ना सर, मोदी जी एक बार थाईलैंड चले गए, उसके बाद साहब भारत की सरकार वहीं से बैंकॉक और पटाया से चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ सर। अमित शाह एकदम लेटा हुआ है वहां पर, मसाज करा रही है। जयशंकर अभी अभी आया है, नीम होताई कह रही है कि मैं टैक्स किस पे लगाऊं, टैक्स किस पे लगाऊं। सोचो आप। और इन सबका व्यवहार देख के जो है राजनाथ कह रहा है मैं कड़ी निंदा करता हूँ मोदी जी आपकी, कड़ी निंदा करता हूँ आपके मालिश की, ये वो। सोचो एकदम गजब ही सीन होगा मतलब। और फिर हमारे मोदी जी पब्लिक को एड्रेस भी ऐसे करेंगे, खा खोंग ठाकवा थाई लिखा पढ़ो, ऐसे करके कोई भाषा बोलेंगे रात को 8 बजे आके, लोगों को समझ नहीं आएगी। तो सर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटर, मतलब इसका पोटेंशियल देखो ना सर, कि टूरिज्म पे कितना पोटेंशियल होगा। अभी आदमी वैसे ही इन्फेक्शन लेने थाईलैंड जा रहा है, इसके बाद अब जो है आदमी जब ये हाईवे से थाईलैंड जाएगा, तो आप इंडिया में इन्फेक्शन का लेवल सोचो सर, सबसे बड़ी चीज। तो इस प्रकार से साउथ एशिया में भी एक दूसरे के साथ टूरिज्म बढ़ाओ, बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ाओ। व्यापारी आज की डेट में बांग्लादेश का बंगाल आना चाहता है, बंगाल का व्यापारी अगर कोई बचा कुचा है जिसको ममता ने नहीं लूटा, वो बांग्लादेश जाना चाहता है। तो एक दूसरे की टेरिटरी में सब जाना चाहते हैं। तो ये चीज को समझो। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं कि सर महेंद्र लामा नियाज नायक ऑन हाउ टू बेसिकली resolve conflicts. So they say that the best way to resolve conflicts is, number one, that they have given two strategies. The first strategy they have said is that let's go ASEAN way. ASEAN way means that they have said कि we must promote what is called as economic integration. Only if the business interests are deeply promoted, and if South Asia realizes that their business can be explored with reference to the other territory, then one thing is very clear, sir. Higher the business potential, higher the probability that in this scenario, regionalism will be aggressively promoted. Second important strategy that they give is that they say कि भाई each of these SAARC members must create a position called in their foreign ministry a minister of state for SAARC affairs. बड़ा रेडिकल सोल्यूशन है, बड़े सीरियस लेवल पर अगर कंट्रीज को करना है तो, कि भाई इन योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपॉइंट अ पर्सन हु इज गोइंग टू हैव अ रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सार्क अफेयर्स. And this kind of a person now can work with his counterpart of SARC members, where they can have a meeting at every quarter level. And quarterly, they can sit down to create a 3-month roadmap to promote business, to promote tourism, to promote diplomatic relationship. So business, tourism, diplomatic relationship. 3 points if you emphasize. MOS level, बहुत रेडिकल सोल्यूशन मैंने आपको फिर बोला सर, उस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि बहुत फायदा होगा. एक पॉइंट साथ में ये लोग हमेशा बार बार बोलते हैं कि यू मस्ट अलाउ businesses to first talk to the counterparts in the other countries. Allow the businesses, sir, to talk to their counterparts. Sir, if an Indian businessman now starts talking with a counterpart in Pakistan, sir, they will be able to explore the best possible way in which regionalism can be promoted. And they can communicate that particular point to, let's say, the MOS SARC affairs. So this way, an ecosystem has to be built to do this. समझ में आई जी? अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे. इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट अदर साउथ एशियन रीजनल इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले अ रोल इन स्ट्रेंथनिंग द साउथ एशिया एंड हेल्प प्रमोट रीजननेस? Examine such institutions and use scholarly analysis to build the alternate thesis argument which is gaining traction in South Asian diplomacy in contemporary times, sir. Sir, there is an important scholar whose name is Alison Judith. Alison, Alison, Judith, Judith. Sir, Alison Judith has recently written a very important book. That book is What Can SAARC Learn from the World? What can SAARC learn from the world?
In this book, Alison Judith has presented an argument that there are various templates available today in other regional organizations that can be copied by SAARC. For example, number one, Alison Judith says that they can learn about military cooperation through NATO. First point, NATO. Alison Judith says that considering that there is a power asymmetry amongst all South Asian members, if they establish direct military to military relationship, the militaries can have better communication with their counterparts. Better communication of military with their counterparts can remove the mistrust. So learn from NATO this. Number two, learn from the SCO, Shanghai Cooperation Organization, that how you can resolve border issues, which today constitute the heart of the regional mistrust. Why, if China could resolve border issues with Central Asian countries, the same approach can be copied by South Asian countries from there. So this is an alternate way of promoting regionalism. Third, from the European Union model, they can start two things. First thing is they can go for what is called as a customs union. That amongst South Asia, no custom duty trade. This will help each country to leverage their comparative advantage. No custom duty trade. And second thing he says is that they can go for what is called as leveraging in the future people to people movement. Sir, European Union, the biggest feature is, sir, people to people movement from one border to the other without issue. So you can learn this from EU. Then from ASEAN, the last point that he says, that from ASEAN, you can learn a very important thing, sir. And from ASEAN, these SAARC members can learn how to basically produce for the world. How to basically produce for the world. ASEAN countries have developed pioneer progress in this, sir. Make for the world. South Asia can come together and also make a supply chain for the world. तो ये सारे पैरामीटर्स पे काम किया जा सकता है सर. समझ में आई जी. अगला है सर, नेक्स्ट स्कॉलर है SAARC overlap thesis. Sir, SAARC overlap thesis has been given by a scholar named Mani Mangi. Mani, Mani, Mangi, Mangi. Mani Mangi. अब यहाँ पर मनी मांगी ने क्या बोला है, उसने कहा है कि सर SAARC members can actually use the alternate thesis, जो अभी पिछली thesis अपन ने पढ़ी, because they have lot of overlap with other organizations. वहां से ये एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 आसियान, मेंबर इंडिया. सार्क का एक ही मेंबर है सर जो आज की डेट में आसियान का मेंबर है, जो है इंडिया. नंबर 2, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग. मेंबर्स आर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश. एशियन कोऑपरेटिव डायलॉग, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश. थर्ड इज एशियन रीजनल फोरम. एशियन रीजनल फोरम. Members are India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Next is, sir, an organization which is called Economic Cooperation Organization, ECO. Members who are common to SAARC here are Pakistan, Afghanistan. Then we have next organization, sir, East Asia Summit, EAS, East Asia Summit. Member here is India. Sir, then we have next body, Asia Economic Grouping. Asia Economic Grouping.
Members are India, Pakistan. So, sir, these are organizations where there is so much of overlap today. You can learn from each other, share the best practices. अब आते हैं जी सर, ट्रेस द इंटेलेक्चुअल ओरिजिन ऑफ साफ्टा। सर यहाँ पे दो लाइनें लिख लो जी। साफ्टा वाज born as South Asia Preferential Trade Agreement. Preferential Trade Agreement in 1993, but failed because political issues prevented economic cooperation in the 1990s. In 2004 in Islamabad, SAARC members adopted SAFTA, Free Trade Agreement, SAFTA, with the objective to reduce trade barriers and ensure maximum tariff of 0 to 5% and a free trade zone to be established by 2016. However, the objectives are still not achieved because of political differences that hinder economic cooperation. ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, कंपेयर दी साफ्टा टू ईयू एंड आसियान। सर सर यूरोपियन यूनियन के बारे में देर आर 3 points टू रिमेंबर सर, which are not a part of SAFTA. First point is that European Union is a common currency, which is a euro. SAFTA has no such vision of a common currency. आप एक टेबल बना लो छोटा सा, उस टेबल में लिख लो ऊपर एक जगह पर साफ्टा, एक जगह पर ईयू, और लेफ्ट साइड पे लिखो नंबर 1 पॉइंट और टिक और क्रॉस कर लेना। कॉमन करेंसी ईयू में है, साफ्टा में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फ्रीडम टू ट्रैवल ईयू में है, साफ्टा में नहीं है। फ्रीडम टू ट्रैवल। थर्ड, फ्रीडम टू वर्क इन ईच अदर्स टेरिटरी। फ्रीडम टू वर्क इन ईच अदर्स टेरिटरी ईयू में है, साफ्टा में नहीं है। अब आते हैं, एक लाइन खींच दो और अब लिखो आसियान और साफ्टा। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट सर, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, कॉमन टू बोथ सर। आसियान में और साफ्टा में दोनों में ये पॉइंट है। सेकंड इज सर, कंसल्टेशंस फॉर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, दोनों में क्रॉस, नाइदर इन आसियान नॉर इन साफ्टा। थर्ड इज कंसेंसस बिल्डिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। सर कॉमन इन बोथ आसियान एंड साफ्टा।
कंसेंसस बिल्डिंग। तो ये क्लियर हुआ जी। जीरो काटे समझ आ गए जो लिखे हैं। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। What is the relevance of SAFTA in the era of Chinese BRI use scholars to examine, sir? Scholar here is Sir Shrikant Kondapalli. Shrikant Kondapalli. 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 अब आप एक काम ये कर सकते हो सर, BRI लिख लो, साफ्टा लिख लो। फर्स्ट पॉइंट अंडर BRI इज दैट सर फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। साफ्टा में फोकस इज ऑन रीजनलिज्म नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड इज सर कि BRI फोकस इज ऑन लैंड लीज प्रोजेक्ट्स। साफ्टा में लिख लो सर फोकस इज ऑन फ्री ट्रेड जोन। थर्ड पॉइंट है सर कि BRI में फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट्स टू बी फाइनेंस थ्रू डेट। डेट मीन्स लोन्स गिवन बाय चाइना। प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय डेट, लोन्स गिवन बाय चाइना। और इन कंट्रास्ट यहाँ पे साफ्टा की बात करें तो सर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अब अगला क्वेश्चन देखो सर, हाउ कैन सार्क बी मेड मोर इफेक्टिव, एक्सप्लेन यूजिंग स्कॉलर्स। अभी आपको मैंने 3-4 स्कॉलरशिप्स कराई, क्लास में अभी बैठो और अभी के अभी उन स्कॉलरशिप्स को देख के यहाँ पर लिखो। ये क्वेश्चन आपका एक समरी है पिछले 4-5 क्वेश्चंस की, जिसमें हमने डिस्कशन किया इंप्रूवमेंट के बारे में। स्कॉलर उसका कोर आइडिया लिखो, लिखो अभी बैठ के, अगले 5 मिनट में करो इसको।
हाँ जी, क्या स्टेटस है? हो गया सबका, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखो सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंट यूज ऑफ टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल अगेंस्ट इंडिया, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स टू सार्क हैज रिक्वायर्ड अ न्यू मोमेंटम, explain in reference to the BBIN motor vehicle agreement and BIMSTEC initiative। तो ये क्वेश्चन अगेन आपका एक होमवर्क है सर, इसके लिए आपको एक रिसर्च पेपर दूंगा मैं, आप उसको पढ़ेंगे। तो ये आप वहां से करेंगे। क्लियर हुआ जी यहाँ तक जितना आज हमने किया सर? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? गुड। यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। रिसर्च पेपर विल बी प्रोवाइडेड वंस माय पेपर टू गेट्स ओवर बेटा। पेपर टू कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जितने मार्क एरिया है ना मैं पूरी वर्कबुक में, उनके रिसर्च पेपर आपको अलग से एक कोर्स टाइटल नीचे ही बना के ना उसमें दे दूंगा। जैसे अभी आप जाते हो तो कोर्स पे आपको दिखता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर उसमें लेक्चर होते हैं, फिर वहां पे वो होता है, हाँ वो मेंशन कर दूंगा बेटा, पेज नंबर वाइज ही करूंगा, डोंट वरी। कि रिसर्च पेपर फॉर पेज नंबर 78, रिसर्च पेपर फॉर पेज नंबर 73, ऐसे कर करके करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर आपको वो पढ़ना सीखना है, क्योंकि एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको जब रेगुलर बेसिस पे रिसर्च पेपर देता रहूंगा, तो कम से कम आपको वो प्रोसेसिंग एबिलिटी आ जाएगी। तो कम से कम ये है कि जैन फेब मार्च में 2-3 महीने जब पूरी सर भी अपना पार्ट ले रहे होंगे, तब मैं पैरेलली डाउट क्लास ले रहा हूँ जब आपके साथ, तो डाउट क्लास में कम से कम आप अपनी एबिलिटी जो रिसर्च पेपर पढ़ने की उसको और डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए वो रिसर्च पेपर आपको मैं जनवरी में दूंगा, पढ़ना तब से शुरू करना, और जनवरी के बाद फरवरी मार्च में हम फिर उनको और अच्छे से समझेंगे जब डाउट क्लास हो। कंपैरेटिव में मैंने आपको कोई होमवर्क दिया नहीं था, क्योंकि कंपैरेटिव थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जिसमें रिसर्च पेपर कम है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर किताब पढ़नी पड़ती है। तो आई डोंट वांट यू टू बाय एनी बुक्स। सो इन दैट सेंस रिसर्च पेपर्स आर मच मोर इजियर। आपने जब एक बार पैसा कोर्स में लगा दिया तो नो नीड टू स्पेंड मनी टू बाय बुक्स नाउ, एटलीस्ट फॉर PSIR विच इज देयर। तो वो चीज़ आपके लिए फिर रिसर्च पेपर बेस्ड हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। तो रिसर्च पेपर्स आपको एंड में ही दूंगा जनवरी में, एक ही बार सारे होमवर्क के, और फिर आप आराम से उनको कर सकते हो। ठीक है जी। चलो जी, मिलते हैं फिर। हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं, उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर देते हैं, अभी 9:15 पे थी वो, तो उसको 7:15 हुए हैं, तो 8:45 पे कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देता हूँ। थैंक यू।